अस्सलाम वालेकुम। मेरी नेम इज़ मोहम्मद सादुल्ला। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके है। मीन दैट जिस तरह हम पहले एक सीक्वेंस के साथ चल रहे थे, कभी बीपीएससी की तैयारी, कभी अकाउंटिंग, कभी मार्केटिंग, मतलब ये भी है जनरल नॉलेज के रिलेटेड। तो थोड़ा सा पहले से हटके है ये। इट्स मीन इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एक जनरल नॉलेज टॉपिक है। जनरल नॉलेज टॉपिक में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूस्टन मैरीटाइम अटर्नी। ह्यूस्टन मैरीटाइम अटर्नी है क्या चीज़, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम, ये अब उसकी स्टोरी बता रहा है डिटेल के साथ। वंस अपॉन अ टाइम इन द ब्लस्टिंग सिटी ऑफ Houston, there lived a young and impetuous lawyer named Mark. He specialized in maritime law, which dealt with legal matters related to ship, boats, and everything connected to the sea. Mark was passionate about his work and always eager to help those in need. अच्छा, अब इसकी जो सिंपल स्टोरी है, 3-4 चीज़ें इसने पहले पैराग्राफ में बताई हैं। वो क्या क्या है? एक है कि वो किस सिटी में रहता था, दूसरा है उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में थी, तीसरा है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड था, चौथा है वो किस तरह मदद करता था। ये उसने सारी की सारी चीज़ें पहले पैराग्राफ में बता दी। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड है? वन सनी मॉर्निंग मार्क रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ डिस्ट्रेस्ड फिशरमैन नेम्ड जैक। जैक Jack's fishing boats had been involved in a collision with a large cargo ship, causing severe damage to both vessels. The accident left Jack with injuries and his boat in ruins, putting his livelihood at risk. Jack desperately needed legal advice and assistance to seek compensations for the losses he had suffered. ठीक है, ये अब इधर तक क्या बताता है? इसने जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ना, वो लिखा है कि एक सुबह एक कॉल आती है फिशरमैन की जिसका नाम था जैक। कॉल किसको आती है? मार्क को कॉल आती है। फिशिंग बोट हैड बीन इन्वॉल्व इन अ कोलिजन विद अ लार्ज कार्गो शिप। अब वो ये बताता है कि लार्ज कार्गो शिप। अच्छा, द एक्सीडेंट लेफ्ट जैक विद इंजरीज एंड हिज बोट इन ruins, putting his livelihood at risk. अब ये वाली सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। उसके बाद चलते हैं with the determined separate Mark rushed to meet Jack at the harbor. The fisherman explained that had happened, and Mark listened carefully, taking notice to understand the full extent of situation. He assured Jack that he would not his best to fight for justice and
hold the responsible parties accountable. Mark began his investigation poring over maritime laws and regulations and collecting evidence to build a strong cases. ठीक है, ये क्या कह रहा है? Mark began his investigation poring over maritime laws and regulation and collecting evidence to build a strong cases. अच्छा, इधर तक हमने पढ़ लिया. He interviewed witnesses, reviewed the accident report and consulted with experts to assess the damage and calculate the loss Jack and had injured. Finally, the day of. अच्छा, अभी ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. ऊपर वाला पैराग्राफ स्किप हो गया. As days turned into weeks, Mark worked tirelessly to prepare for the legal battle ahead. He faced many challenges and obstacles, but his dedication never wavered. With experience and determined, Mark stood as a beacon of hope for Jack and his fellow fishermen. Finally, the day of trial arrived. The courtroom was filled. Courtroom was filled with the tension as Mark presented his case. Ship had been neglected, failing to follow proper safety protocols which lead to the collisions. Mark's Campling's argument had well-prepared evidence left a strong impact on the judgment and journey. In the end, justice prevailed. The court ruled in favor of Jack, granting him the compensation he deserved for his injuries and the damage to his fishing boats. Mark's hard work and expertise had paid off, bringing relief and happiness to the fisherman and his family. Word separate about Mark's remarkable victory, and soon he became known as the go-to maritime attorney in Houston. His dedication to his client and his passion for justice earned him the respect and admiration of many. From that day forward, Mark continued to represent those in the maritime industry, ensuring their rights were protected and their voices were heard. He had found his true calling, and in doing so, he had made a significant impact on the lives of those he served.
ये था आज का हमारा टॉपिक, किसके रिलेटेड, ह्यूस्टन मैरीटाइम अटॉर्नी। इसने सारी की सारी स्टोरी बताई है कि ह्यूस्टन मैरीटाइम क्या था, क्या करता था, किस शोबे के साथ इसका लिंक था, ये किस तरह लोगों की मदद करता था और ये किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था। ये सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।